Good morning, students. Today we are going to discuss NCERT exercise of first chapter, some basic concepts of chemistry. So first उसमें questions हैं, calculate the molar mass of H2O. Second part है carbon dioxide. Third CH4, that is methane. Yes. First, what is the molar mass of H2O? Then carbon dioxide, CO2. Then methane. Yes, Aryan Soni. What is the molar mass of H2O? Yes, ma'am. Ma'am, 2 into 1 plus 16, which will give 18 gram. Molar mass of H2O is equal to 2 into, yes beta, 1. 1 plus 16, हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 gram. 18 ग्राम पर मोल. Molar mass of H2O. Next, carbon dioxide. 1 into 12 plus 16 into 2. Molar mass of carbon dioxide is equal to 1 into 12 plus 2 into 16. 12 plus 32 is equal to, yes, 44 correct? gram per mole. 44 gram per mole. Per mole. Yes. Next, methane CH4. 1 into 12 plus 4 into 1. Answer बोल दीजिए. 16 gram per mole. Yes, 16 gram per mole. ठीक है. Next NCERT question. Calculate mass percent of different element present in sodium sulfate. Question number 1.2 of your NCERT. Calculate mass percent of different elements present in sodium sulfate. Sodium sulfate Na2SO4. You have to calculate the mass percent of sodium, sulfur, and oxygen. Yes. दिशा प्रभाकर सॉल्व करवाइए बेटा. Yes, ma'am. And the molecular mass of Na2SO4 is 142 gram moles. बेटा जी 2 into 23 plus 1 into 32 plus 4 into 60. हाँ जी बोलिए. It will give 142 gram moles. 142. The next step. And the elements present. And the elements present in sodium sulfate are sodium, sulfur, and oxygen. So mass percent of sodium is 23 into 2. सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना प्रेजेंट है? 46. 46 23 divided by into 2, 46 gram. 142 into 100. 46 divided by 142 into 100. सॉल्व कीजिए दिशा. Yes, ma'am. $32.38. 32.39. Next, mass percent of sulfur. Yes, heating. Ma'am, it will be 32 upon 142 into 100. हाँ जी, कैलकुलेट करिए. Ma'am, 22.53. Next, mass percent of oxygen. Yes, heating. Ma'am, oxygen will be 64 upon 142 into 100. हाँ जी.
45 point. Ma'am, 45.07%. Okay, good. Note down the answer. Sodium 32.39, sulfur 22.54, oxygen 45.07. Yes, Garab ji. Yes, Garabdeep. Yes, ma'am. Read करिए. Determine the empirical formula of an oxide of iron, which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass, and atomic mass of iron 55.85 unified mass, and of oxygen 16 unified mass. Okay. First step क्या होगा? First step. Yes. Number of moles of iron. फर्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स आयरन एंड ऑक्सीजन. परसेंटेज कितनी गिवन है? 69.9 और ऑक्सीजन की 30.1. ठीक है. एटॉमिक मास 55.8. 55.85. एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16. नेक्स्ट स्टेप, परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास के साथ. 1.25 for iron. फर्स्ट आ गया 1.25, राइट. 30 डिवाइडेड बाय 16 0.94. 30.1 divided by 16 1.88. Yes. Next step, Simplest molar ratio. 1.88 divided by 1.25. अब ये हो जाएगा आपका 1.5. नेक्स्ट स्टेप धानिका. यस धानिका. Yes, ma'am. Ma'am, 1 into 2 is equals to 2 and 1.5 into 2 is equals to 3. And Fe2, empirical formula is Fe2O3. Fe2O3, right? Then the next, calculate amount of carbon dioxide. Calculate amount of carbon dioxide that produced when 1 mole of carbon is burnt in atmosphere. Second part है 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. Third, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. Yes. Calculate amount of carbon dioxide produced. First part है 1 mole of carbon is burnt in atmosphere. Yes, Gursharan Kaur. Ma'am, first of all, we will write the balanced equation. First, balanced chemical equation, carbon plus O2 give rise to carbon dioxide, CO2. Okay, right? It's 1 mole. Ma'am, 1 mole. Yes. 1 mole of carbon produces 1 mole of CO2. So the amount of CO2 produced will be 44 grams. Okay. 1 mole of carbon give rise to 1 mole of carbon dioxide. अगर 1 मोल कार्बन की बर्निंग हो रही है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. आपने अमाउंट बतानी है तो 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया? 44 ग्राम. क्लियर गुरशरण जी? ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाइए गुरशरण. Ma'am, again we will write the balanced equation. Yes. C plus O2 is gives rise to CO2. Ma'am, here I want to ask, dioxygen is O2? Yes, madam. Now 16 gram oxygen is available.
16 gram of oxygen give rise to half the amount of 1 mole of CO2. Krish Kumar. Yes, ma'am. 16 gram is 16 by 32 mole, which is 0.5 mole. So 0.5, but ma'am, here 1 mole of carbon is given. So oxygen will be limiting reagent, and 0.5 mole of carbon will react with 0.5 mole of oxygen to give 0.5 mole of carbon dioxide. 0.5 mole of carbon dioxide means कितने grams हो गए बेटा? 1 by 2 into 44, that is 22 gram. ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? 22 ग्राम. ऑक्सीजन क्या है इसमें? डाइऑक्सिन O2 is a limiting reactant. Next part, 2 moles of carbons burnt in 16 gram of dioxygen. Ma'am, moles of oxygen are 16 by 32, that is 0.5. And 1 mole of oxygen react with 1 mole of carbon. So 0.5 mole of oxygen will react with 0.5 mole of carbon to give 0.5 mole of carbon dioxide. Here oxygen is limiting reagent. इसका भी आंसर क्या होगा? 0.5 मोल. आप कह रहे हो 0.45 Yes, मोल ma'am. मींस 22 ग्राम. Yes, ma'am. ठीक है. अब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन ही है. Oxygen. Yes, ma'am. फर्स्ट पार्ट का आंसर 44 ग्राम, सेकंड पार्ट आंसर 22 ग्राम, थर्ड पार्ट का आंसर भी 22 ग्राम. ओके. 22. Now any doubt in this numerical? Next is calculate mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास सोडियम एसिटेट का गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल. कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COONA. सोडियम एसिटेट CH3COONA. सोडियम एसिटेट. Calculate mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Yes, हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मोलैरिटी का. You know molarity is equal to number of moles of divided by volume of solution in liter. Yes. Vaibhav Kalia. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Vaibhav. मैम पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला से निकालेंगे वेट अपॉन मोलर मास वाले से इनटू Given mass of solute divided by molar mass of मोलर मास okay ऑफ 1000 अपॉन 500 ml. volume of solution in milliliter. Yes बेटा. मोलैरिटी हमें गिवन है वैभव. यस मैम 0.375. ओके. और मास ऑफ सॉल्यूट हमें सॉल्व करना है सोडियम एसिटेट का. मोलर Yes, ma'am. मास गिवन है यस मैम. 80.0245. यस मैम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500. यस मैम.
कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ जी, कैलकुलेट कर दीजिए। मास ऑफ सोडियम एसीटेट, यस अश्मित अग्रवाल, Yes, ma'am. सॉल्व कर लिया बेटा आपने? Yes, ma'am. हाँ जी, 15.3795 gram. यस दीप कमल, मैडम 15.38 ग्राम। ओके 15.38 ग्राम। Very good Vaibhav Kaliachi and very good Deep Kamal. Next numerical of your NCERT book. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. Moles per liter means अपने molarity यहाँ पे solve करनी है. Calculate molarity of nitric acid. Density given है, density is 1.41 gram per milliliter. And the mass percent of nitric acid is 69%. Calculate concentration in moles per liter. Moles per liter means अपने यहाँ पे क्या solve करनी है? Molarity. Calculate molarity of nitric acid. Nitric acid HNO3. Yes, Ashmit Agarwal. Yes, ma'am. Molarity is equal to Number of moles of solute upon volume of solutions in liter. number of moles of volume Of solution. in liter. Liters. And the number of moles given mass, Upon molar mass. molar mass of nitric acid, Yes, ma'am. Into 1000 upon volume volume of of solution in liters. milliliter. Liters. Milliliters. हाँ जी, And volume of solute 69 gram हो जाएगा. mass of Rate of solution 69% given है, means 69 ग्राम क्या हो गया हमारा nitric acid. Okay, molar mass of nitric acid Yes, ma'am. HNO3 1 into 1 1 plus 14. 63 gram. 48. हाँ जी, 63 gram. 63. 63 gram. ठीक है अश्विनी हमारे जी? में yes ma'am. अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता. Yes ma'am. Density से निकालनी. Yes, right. Mass upon volume. Yes, we know density is equal to mass upon volume. ठीक है? Yes, Now ma'am. volume is equal to mass upon density. Yes, अब ma'am. यहाँ Mass पे या जो डेंसिटी गिवन है वो सोल्यूशन की गिवन है. यहाँ पे जो डेंसिटी 100 गिवन है gram. वो सोल्यूशन की गिवन है, तो मींस यहाँ पे हमें जो मास लिखना है वो सोल्यूशन का लिखना है. So what is the mass of solution? 100 gram. 100. Very good. Mass of Nitric solution 100. Density कितनी गिवन है बच्चे? What is the density of solution? 1.41. 1.41. Volume of solution is equal to 100 divided by 1.41. 1.41. यहाँ पे हो जाएगा 70.92 मिलीलीटर. ओके जी. Now 69 divided by 63. अब 15.41 आ रहा. 15.44 0.4. molar.
or 15.44 mole per liter. Mole per liter. Okay. Now, next numerical. Next, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? Yes. Molar mass of copper sulfate is equal equal to 63.5 multiply 1 plus 32 multiply 1 plus 16 multiply 4 equal 63.5 plus 32 plus 64 equal 159.5 gram mole. okay. Now, how much how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? अब अगर 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है, देन कॉपर कितना उसमें 63.5 ग्राम. ग्राम. हाँ जी. तो मैडम 1 ग्राम में होगा 63.5 डिवाइड बाय 159.5. 100 ग्राम में होगा 63.5 डिवाइड बाय 159.5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 39.81 ग्राम. Yes, Deep Kamal. 39.81 ग्राम. Very good. Very good, Deep Kamal.